Question 11. The function f and g are defined by fx is equal to x square plus 3 uh, for x is greater than 0. This is the domain. X is greater than 0 is the domain of this function. And gx is another function that is a linear function. Gx is equal to 2x plus 1 for x greater than negative 1 over 2. This is the domain of gx. Find expression for f gx. This is a compound function f or gx. f gx. We have to find the composition of these two functions. Now we write f gx. Now f inner function is gx. In place of gx, we will put gx is 2x plus 1. So here we put 2x plus 1. Now we will compare this as 2x plus 1. Now we compare with the original function fx. Look at this f within bracket x है तो यहाँ पे x स्केयर आ जाएगा प्लस 3. अगर यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा विदिन ब्रैकेट वही यहाँ पे उसी का स्केयर आएगा. तो यहाँ पे 2x plus 1 है तो in place of x we will put 2x plus 1. So this becomes 2x plus 1 whole square plus 3. So this is fgx. Next is find an expression for fg inverse x. fg हमने ये फाइंड कर लिए. नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स इनवर्स. तो इनवर्स के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट दिस इज इक्वल टू fgx. वी विल पुट fgx इज इक्वल टू y. तो first we put y is fgx is equal to y. This becomes y is equal to 2x plus 1 square plus 3. From here we make x the subject. 2x plus 1 square is equal to y minus 3. Taking square root each side, 2x plus 1 is equal to plus minus y minus 3 square root. 2x will be minus 1 plus minus y minus 3. Now x is equal to we divide right side by 2. Each term will be divided on the right side. Each term will be divided by this 2. So this becomes minus 1 over 2 plus minus 1 over 2 y minus 3 square root. So now from here x will be, we are finding the inverse of f gx. Now we will put here f gx inverse. Fg inverse will be minus 1 over 2 plus minus 1 over 2. Now we replace y by x. So this becomes x minus 3 square root. Now we will decide minus 1 over 2 plus minus. Now we will select plus or minus. Which sign will be valid? It depends upon the domain of the function. So next is since the domain, look at this, domain of both functions are given. X is greater than 0 of the domain of fx, and domain of gx is x is greater than negative 2, negative 1 over 2. So we will greater than negative 1 over 2. So we have
-1/2 प्लस 1/2 x माइनस 3। तो ये हम प्लस का साइन यहाँ लेंगे, नेगेटिव का साइन यहाँ पे नहीं लेंगे, बिकॉज डोमेन इज ग्रेटर देन -1/2। This is FG inverse. Now we have to state the domain of FG inverse. अब हमने FG inverse अब हमारे पास ये है, इसकी डोमेन फाइंड करनी है। तो डोमेन, वी नो दैट डोमेन ऑफ domain of this inverse will be the range of the function, or domain of the function. Look at this, domain of the function is x is greater than -1/2. This is the domain of the function gx, और ये domain of gx जो होगी ये इनवर्स की रेंज के इक्वल होगी। दिस इज द रेंज एज ए होल, दिस इज द रेंज ऑफ एफ जी इनवर्स। तो ये इनवर्स की रेंज और डोमेन ऑफ द फंक्शन ये इक्वल होंगी। जब इक्वेट करेंगे तो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट वैल्यू ऑफ एक्स विल बी द डोमेन ऑफ द एफ जी इनवर्स। तो सो दिस -1/2 प्लस 1/2 x minus 3, this is greater than -1/2. So this becomes cancel out. Now we have 1/2 x minus 3 under root is greater than 0. 1/2 राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो this becomes x minus 3 square root is greater than 0. Taking square each side, x minus 3 is greater than 0. Then x is greater than 3. This is the domain of FG inverse. Domain of FG inverse. Now next part of this question is solve the equation fgx minus 3 is equal to g of fx. Now fgx we have found already. fgx ये देखें हमने फाइंड कर लिया है, दिस इज fgx, और हम in place of fgx we will put that, because we have found this already. But we will find first g of fx. First of all, we will find g of fx. G of fx, in place of fx, this is the inner function. In place of fx, we will put its value. G fx is x square plus 3. Now, in place of gx, अब हम यहाँ देखें gx विद इन ब्रैकेट x है, तो राइट साइड पे 2x plus 1 है। अब यहाँ पे इस x, in place of this x, we will put this. So this becomes 2x square plus 3 plus 1. So this is g of fx. 2x square plus 3 plus 1. Now it is given that we have to solve this equation. Fgx minus 3 is equal to g of fx. Fgx we have already found.
एफ जी एक्स -3 इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। ये एफ जी एक्स हमने फाइंड कर लिए हुए है, दैट इज 2x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3। तो नेक्स्ट -3 भी है, इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। अभी हमने जी ऑफ एफ एक्स जो है वो ये फाइंड किया है, इज इक्वल टू 2x² प्लस 3 प्लस 1। नाउ सिंप्लीफाइंग इट, cancel out, 2x plus 1 square is equal to 2x square plus 6 plus 1. Expanding it, expanding the left hand side by using the identity, 4x square plus 1 plus 4x is equal to 2x square plus 7. 4x square plus 1 plus 4x minus 2x square minus 7 is equal to 0. This becomes 2x square plus 4x minus 2x square plus 4x minus 6 is equal to 0. So uh, dividing each side by 2, this becomes x square plus 2x minus 3 is equal to 0. Factorizing, x square plus 3x minus x minus 3 is equal to 0. These are two factors, x minus 1, x plus 3 is equal to 0. From here x is equal to 1 or x is equal to -3. Now, which value is valid, which is not valid, it depends upon the domain of the functions. So, since the domain of the function, look at this, the domain of the function is x greater than -1/2. x is greater than 1/2 एफ एक्स की डोमेन है, ये भी इसी में आ जाती है, x is greater than -1/2, ये इसका इंटरसेक्शन है। तो सो it depends upon x is greater than -1/2, so this value is not valid. This is not valid, so only the answer is this. Next question number 12 of this paper is, the diagram shows a curve with the equation y is equal to 4x power 1/2 minus 2x for x is greater than or equal to 0, and a straight line with the equation y is equal to 3 minus x. This is the equation of the curve. This is the equation of the line. The curve crosses the x-axis at 4 0. देखिए ये कर्व जो है, ये कर्व यहाँ पे 4 0 पे x-axis को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, एंड क्रॉसेस द स्ट्रेट लाइन एट बी एंड सी। कर्व जो है वो लाइन को बी और सी पे इंटरसेक्ट करती है। This is the intersection point of line and the curve. Also, this is the point of intersection of the line and the curve. Find by calculation x coordinates of B and C. Clearly, B and C are the point of intersection of line and the curve. So, point of intersection हम कैसे find करते हैं? We will solve the equation of curve and the line simultaneously. So, this is equal to y, and this is also equal to y. So we will substitute, we get 4x power 1/2 minus 2x is equal to, right side, this is the y of line 3 minus x. So we will solve this equation, rearranging it. 4
x power 1 over 2 minus 2x minus 3 plus x is equal to 0. This becomes 4x power 1 over 2 minus x minus 3 is equal to 0. This is a disguised quadratic equation. यहाँ पे पावर ये देखें, ये यहाँ पे x की वेरिएबल की पावर 1 over 2 है और 1 over 2 का डबल जो है वो 1 होता है, यहाँ पावर 1 है, तो we can substitute to make it easier. So this is not a quadratic equation. To make it quadratic, we make a suitable substitution. We put x power, that this is a substitution, put x 1 over 2 is equal to y. Now this becomes 4 y minus y square minus 3 is equal to 0. तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड्स, वी गेट वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0. फ्रॉम हियर वी गेट टू वैल्यूज ऑफ y. इसको फैक्टराइज करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0. y इंटू वाई माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, y माइनस 3 is equal to 0. y minus 1, y minus 3 is equal to 0. y is equal to 1 or y is equal to 3. Actually, we have to find x. Now resubstitute here. y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, y की दो वैल्यूज आएंगे, दोनों सेपरेटली पुट करेंगे, तो दिस बिकम्स x पावर 1 over 2 is equal to 1. From here, taking square x is equal to 1. एक x की वैल्यू हमारे पास ये आई है एंड दूसरी वैल्यू y की हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे, तो दिस बिकम्स x पावर 1 over 2 is equal to 3. Taking square each side, we get x is equal to 9. These are two values of x. X is equal to 1 and x is equal to 9. These are the x coordinates of B and C. Clearly B का x coordinate B is close to origin, तो x B के लिए 1 होगा और C का x coordinate जो है वो 9 होगा. यहाँ पे ये देखें, हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 9. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स हैं. ये इसका जो है x 1 आएगा और यहाँ पे C का जो इसके अगेंस्ट x है वो x इज इक्वल टू 9 आएगा. तो सो नेक्स्ट इज शो दैट B is a stationary point on the curve. Now we have to show that B is a stationary point. This point is a stationary point. Stationary point means this is a maximum point or minimum point. Clearly it will be a maximum point. So far stationary point gradient will be 0. So first we will find the gradient. Gradient will be, since y is equal to, we will find the gradient of the curve, then we will put gradient is equal to 0. We can find the value. We can show that the stationary point. If the answer is 0, then it is shown. So first we find the gradient. Y is equal to 4 x power 1 over 2 minus 2x, differentiating with respect to x, 1 over 2 x power 1 over 2 minus 1, that is minus 1 over 2 minus 2, 2x की डिफरेंशिएट 2 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है 2 से, तो दिस बिकम ग्रेडियंट इज इक्वल टू 0. इसको हम 0 पुट करेंगे, ये इसकी वैल्यू है, इसको हम 0 पुट करेंगे, तो दिस बिकम्स 2 x पावर नेगेटिव 1 over 2 minus 2 is equal to 0. 2
no, we have to show that gradient is 0. तो यहाँ पे हम 0 नहीं लिखेंगे, बल्कि शो करना है कि दिस इज 0. ग्रेडियंट हमने ये फाइंड कर लिया, और 0 किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 1 पे, बिकॉज ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पे अभी हमने इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो हमने फाइंड किया है 1 b पे. तो हम नाउ वी विल पुट x इज इक्वल टू 1 here, then the gradient will be dy over dx 2 into 1 minus 2, that becomes 0. ये शो हो गया कि gradient is 0. This is justified that the B point is the stationary point because its gradient is 0. Now next part of this question is find the area of the shaded region. So shaded region, look at this curve. Shaded region is this. Now we will split it. यहाँ पे हम थोड़ी कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे, ताकि हम ये शेडेड एरिया फाइंड कर सकें. फर्स्ट दिस पॉइंट इज 9 बिकॉज हमने अभी फाइंड किया है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सी इज 9. तो दिस पॉइंट इज एक्स कोऑर्डिनेट इज 9. नो वी नीड आल्सो दिस पॉइंट. अभी हमने ये भी पॉइंट फाइंड करना है. व्हाट इज दिस पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस को लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो वहाँ पे यहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी. तो सो जब हम y की वैल्यू लाइन में पुट करेंगे इज इक्वल टू 0, तो वो हमारे पास आएगा इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स. y को 0 पुट करेंगे बिकॉज दिस पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस. 3 माइनस एक्स, तो फ्रॉम हियर वी कैन गेट x इज इक्वल टू 3. तो ये हमारे पास ये पॉइंट जो है ये यहाँ पे ये 3 है. इसको एरिया शेडेड हमने कैसे फाइंड करना है. फर्स्ट वी विल फाइंड द एरिया बाउंडेड by the curve and the x-axis. First of all we will find this area. This is the part of the curve. This is x-axis. This is the vertical line. First of all हम ये एरिया फाइंड करेंगे. Then we will find the area of this ट्राइंगल. दोनों एरियाज को माइनस करेंगे तो वी विल गेट दिस. इसके लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी. तो ये फिर शेडेड एरिया हम फाइंड कर सकते हैं. तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स एक्सिस एंड द लाइन विल बी इंटीग्रेटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x. y हमारे पास है कर्व की इक्वेशन है 4x पावर 1/2 माइनस 2x. इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और इसके लिए लिमिट हम क्या लेंगे. लिमिट हम यहाँ पे लेंगे दिस इज 4 और दिस इज 9. वी विल टेक दिस लिमिट अलोंग एक्स एक्सिस. हेयर x is 4, here x is 9. So we will take the limit 4 to 9 here. 4 to 9. Now integrating 4 x power 1 over 2 plus 1, that is 3 over 2 over 3 over 2 minus 2x 2 over 2. Now we will apply the limit. First इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. This becomes 8 over 3 x power 3 over 2 माइनस एक्स स्क्वायर. ये 2 2 से कैंसिल हो जाता है.
So now we will apply the limit 4 to 9, first upper limit, then lower limit. 8 over 3, x is 9, 9 power 3 over 2 minus 9 square, that is 81. This is the upper limit minus lower limit. In place of x, we will put 4. 8 over 3, 4 power 3 over 2 minus 4 square. Now we will simplify it. This becomes 72 minus 81 minus 64 over 3 minus 16. फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास एलसीएम लेके इसको इसको करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम से, तो फाइनली वी गेट ए इज इक्वल टू माइनस 14 होल 1 ओवर 3. तो इसको होल में लिख लें या इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लें. तो दिस इज द एरिया, बट एरिया हियर द नेगेटिव साइन शोज दैट एरिया लाइज बिलो द एक्स एक्सिस. आप देख सकते हैं एरिया, शेडेड एरिया जो है लाइज बिलो द एक्स एक्सिस, बट एरिया इज नेवर नेगेटिव, just negative sign shows that this area is below the x-axis. ये below the x-axis बन रहा है एरिया शेडेड. तो we neglect this sign. फाइनल आंसर में इसको हम neglect कर देंगे. we only take the magnitude. तो सो एरिया को हम लिखेंगे, एरिया विल बी 14 होल 1 ओवर 3. तो नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे. क्लियरली दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, 1 over 2 बेस इनटू हाइट. दिस इज द बेस और दिस इज द हाइट. बेस हमें ये नजर आ रही है कि बेस इज 3 to 9, दिस इज 6, ये साइड 6 है. और व्हाट इज दिस, ये हमने फाइंड करना है. हमें सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, सी पॉइंट क्लियरली सी पॉइंट लाइज ऑन द लाइन. तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमें पता है, वाई कोऑर्डिनेट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 इन द लाइन इक्वेशन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ वाई. तो हम y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, y is equal to 3 minus x, putting x is equal to 9, we get y is equal to 3 minus 6, that is minus 6. 3 minus 9, that is minus 6. So now we will find the area of triangle. Area of triangle, this is a triangle, right angle triangle. This is a right angle triangle. इसका एरिया आएगा 1 over 2 बेस इंटू हाइट. ये हमने 6 फाइंड कर लिया है. तो 1 over 2 बेस इंटू हाइट. 1 over 2 base, sorry, base is 3 to 9, this is base is 6, this is uh, height is also 6. ये अभी हमने फाइंड किया है. but we will take only the we will neglect this negative sign. So area of triangle will be 1 over 2 base is 6, height is also 6, so this becomes 18 unit square. Now we will subtract these two areas. अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल में से दिस एरिया जो है वो ऊपर वाला कर्व बाउंडेड बाय द कर्व उसको माइनस करेंगे, तो शेडेड एरिया हमारे पास आ जाएगा
शेडेड एरिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 18 माइनस 14 होल 1/3, और तो फाइनली वी गेट 3 होल 2/3 यूनिट स्क्वायर. This is the answer.